the glories and achievements of the past years, but also reflect upon the goals that remain unfinished. And even more importantly, we need to build the path that will take us, all of us, forward and make our country thrive. Now, as we start our conversations today, the one question I want you to think about is, what is India? Really, what is India? Yes, it is our motherland. But there is no single, straight, uncomplicated answer to that question, because India is not one, but the ideas of India are many. And those ideas are exactly what we will be focusing on today and tomorrow. We'd like to take a moment here to thank our partners for this event: presenter, Wildstone; state partner, Government of Chhattisgarh; associate partner, Nerolac Paints; wellness partner, Himalaya Wellness Company; technology partner, Acer Laptops; supported by Maharashtra Tourism; print partner, Jansatta; digital partner, Daily Hunt; OOH partner, Apar Advertisers. Ladies and gentlemen, a round of applause for our partners. We really appreciate your support. To start off proceedings for the first edition of this annual summit, I'd now like to invite on stage ABP Network CEO Avinash Pandey for the inaugural address. Welcome, Avinash. Ladies and gentlemen, it is such a privilege to welcome you all to the first edition of ABP Network Ideas of India Summit. We could not have chosen a better year to launch this meeting of some of the finest minds in India and elsewhere. It is the 75th year of India's independence and 100 years of ABP Group. What a great occasion to look back and look forward. It is also a year in which we have already had a third wave of COVID, the threat of a third world war, and what an eventful election in 5 states of our country. Internationally, we are witnessing the decline of American exceptionalism, the rise of Chinese economy, the emergence of Russia's Tsarist dreams, and a curious space race between global billionaires. We are living in the age of uncertainty and anxiety, but also unprecedented prosperity coupled with philanthropy. COVID-19, an extraordinary degree of climate change, and a series of political upheavals across the world have shaken our faith in the things we held so true. The end of history, as we say it, is near. Communism, fascism, and has been conquered. The world was not free to embrace liberal democracy and the market economy. Well, we all know of how that turned out. We are at the moment of our history where everything is contested. In many ways, that is as it should be. The hallmark of an ancient continuing civilization that we are, a young, raucous democracy that we have become, is the debate about ideas. These ideas can range from sustainable development to economic growth, cultural inheritance, to online education, social equity, and index of happiness. At ABP Network, we believe what India believes in. That is a dialogue of decency, an exchange of arguments, in what our one Prime Minister famously said, that there should be Adan Pradan. Well, while we believe in numbers, but we also believe in doing the right thing. We don't only go by TRPs, but by touching people's heart. Audience, we don't measure you, we treasure you. We know news can change lives, and it is no accident that our tagline that we follow, that we have to make an informed and open society. We believe in healthy competition,
and not mindless sensationalism, quantification, fact, not fiction, truth, and not toxicity. It is this philosophy of liberalism that imbues this summit, and I would like to take this opportunity to highlight the 5 big debates that we are going to go through in the next 2 days' time. And we'll hear a lot about in the next 2 days. The first one is nationalism and globalism. Until recently, we all believed internationalism was dead. When I was in college, they used to say, nationalism is passé, internationalism has come. Now, internationalism was dead, and that nationalism had reasserted itself everywhere, from Donald Trump's "Let's make America great again" to Boris Johnson's Brexit. But then COVID-19 made everyone realize how closely we are all bound together. Looking beyond national borders is the only way we'll be able to solve other global problems, issues, whether it is related to digitization, climate change, artificial intelligence, or economic inequality. The second big debate that we'll go through is, at the moment, is the contest between what we also call in advertising a big debate now, between the algorithm and emotional intelligence. Indians have for long believed that to know the world, you need to know oneself. Who will win in this race between the human and the machine? As Israeli historian Yuval Noah Harari once said, that if I am able to constantly reinvent myself, can the machine tracking my thought and emotion keep up? Third debate that we are going to go through is sustainable development. Probably it is the greatest need of today, which is pitted against the mindless consumerism of the past, which has reduced the earth to a gigantic rubbish dump. This is the third big idea you will hear in the next 2 days. The fourth big debate buzzing around the world currently is digital dictatorship versus digital democracy. Internet penetration in India is still not complete. One estimate suggests that we will have 658 million total internet users this year, which is 47% of the population, which means more than half of India is still offline. This twin challenge will continue of controlling transnational corporation which controls our lives and act as a permanent distraction, and of democratization of data which will improve financial inclusion, education equity, and social mobilization. How we are going to walk this tightrope will decide not only our nation's future, but also society that we live in. The last debate is idea of India, which examined great length is my favorite topic, is the history of India. And as a student of history, I love knowing about the past, but we seem to be trapped in two-lit zone between the hyper-nostalgia and futuristic fantasy. So much has changed in the lifetime of those of us who are present here today. I mean, this generation which is present here today has seen so much. Until 1983, we did not have mobile phones. Until 1995, Google became our go-to guide. 1996, Facebook came. And probably then after that, the world started changing in 2004 when Facebook arrived in the world. But we have seen great progress, but we have also seen the great devastation of all these innovations. We are a country of ideas and imagination, of promise and possibilities, of diversity and dynamism, but also of poetry and plurality, some of which you will see in next 2 days. So we want more, but we also know how to live with less. We have the best minds, but we also have the kindest hearts. We believe in a global community, but we also have a faith in India's uniqueness. We love peace, but we also know that we can go to war if we have to defend ourselves. These are the values which are very dear to our group, and I'm proud to represent it today. Most of us who are working in ABP Network are so lucky to be at this time of the year, 100 years of our group. And I seek today, for the next 2 days, your undivided attention to talk and share the ideas that you have about India. Thank you for your time.
Thank you very much indeed for those words. And I think we picked up a life lesson there. Let's develop an attitude where we don't measure, but we treasure. Well, that's certainly a life lesson. Now, ladies and gentlemen, you know, all good things really start by invoking the blessings of higher powers. And today we want to pay a tribute to our motherland. She has nurtured us, nourished us, and protected us. Now, to pay a melodious tribute to India, I'd like to invite an artist so very highly accomplished in both classical and film music. She's won multiple awards and performed around the world to packed concerts. Please warmly welcome the very talented Sanjeevani Bhilande. नमस्कार। भारतीयता के गौरव में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, भारत रत्न लता जी का गाया हुआ, जिसमें बहुत खूबसूरत वर्णन है भारत माता का। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातृभूमि है, मलय पर्वत से जहाँ शीतल पवन बहती है, फुल्ल कुसुमित फूलों से सुशोभित मातृभूमि है, हर तरह से समृद्ध, सप्तकोटि कंठ जहाँ कल कल निनाद करते हैं। जब ये गीत लिखा गया तब 7 कोटि भारतीय थे, अब शतकोटि भारतीय हैं, विश्व के हर कोने में हैं और अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। द्विसप्त कोटि भुजैर्धृत खर करवाले हो जाते हैं, दोनों भुजाओं में शस्त्र लेकर द्विसप्त कोटि हो जाते हैं। इतने सारे भारतीय जब हैं तब कौन है जो इस धरती को अबला कहता है? अबला कैनो माँ है तो बोले, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणी मातृभूमि हैं। कई भाषाएं हैं, सारी मधुर हैं। सुखधाम वरदाम मातृभूमि है, हमें सुख देती है, वरदान देती है, आशीष देती है और सबसे ज़्यादा हमें हमारी पहचान देती है। भारतवर्ष में जन्म पाना बहुत भाग्य की बात होती है। 5000 वर्ष के सांस्कृतिक परंपरा से घड़कर जीन्स हमें मिलते हैं। भारतीयता अनमोल है। विश्व में हम कहीं भी जाते हैं, हमारी भारतीयता हमारे साथ जाती है, फिर चाहे वो नमस्ते हो, साड़ी हो, चूड़ी हो, बिंदी हो या फिर लता जी की आवाज़ हो। तो आइए इस आइडियाज़ ऑफ इंडिया समिट ABP नेटवर्क के इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीयता को वंदन करके करती हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे सस्य श्यामलां मातरं वन्दे, हे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे, हे मातरं वन्दे शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे
Thank you so very much for that, Sanjeevani ji. You know, some things always tug at your heart, and that beautiful rendition, I'm sure, managed to do just that. Ladies and gentlemen, in the past few decades, India has earned many titles: the fastest growing economy in the world, an emerging superpower, a regional leader, and so many others. But one cannot overlook the societal inequities that have been widening. Our speaker for this inaugural session is someone who has dedicated his life to social work and is making a very tangible, positive impact in the lives of others. Please take a look. The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for the struggle against suppression of young people and children. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Getting a greeting like this is all the reward Kailash Satyarthi needs for freeing these children from a life of slavery. He tries to give these kids the childhood they missed. Do you think these kids see you as a Nobel Peace Prize winner? No, I don't think they see me as friend or brother or something like father. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and I have felt their broken spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are born to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, if the children are deprived from their childhood in any part of the world cannot live in peace. The world cannot be human. It's not often the two winners of the Nobel Peace Prize get together, but it happened yesterday when President Obama met Kailash Satyarthi. They were joined by 3 children who were rescued from child trafficking and forced marriage. You cannot live in isolation. All the problems and solutions are interconnected. And so the problem of child labor in any part of the world is your problem. Satyarthi organizes raids with local police. But sometimes employers are tipped off and waiting for him armed. But I have been attacked many times in my life. You had a gun to your head? Literally here. This is dangerous work, freeing these kids. Somebody has to pay the cost for freedom. It does not come on plate. So if not me, then who else will do? Nobel Prize. Who won the Nobel Prize, he asks. Their reply, all of us kids. It's good. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. Well, I need not say anything more at all. Please give a very warm welcome to Nobel laureate Kailash Satyarthi. And please also welcome on stage the chairperson for this session, Vice President News and Programming, Sumit Awasthi. Thank you. बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर वेलकम करिए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको हम ये बोल सकें कि हमारे साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, वो भी शांति में, पीस के लिए, ढूंढे नहीं मिलते हैं। आज़ादी के 75वें साल में है और ये पहले प्योर भारतीय हैं। इसके पहले मदर टेरेसा थी, नो डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी।
वक्त निकालने के लिए, आइडियाज़ ऑफ इंडिया के समिट में आने के लिए। आपके आने से माहौल में 4 चांद लग चुके हैं। हालांकि सुबह के 10 बजे हैं, मैं चांद की बात कर रहा हूँ। माहौल में जो 4 चांद लगे हैं उसकी चमक मुझ तक आ रही है, ये आप लोगों की वजह से 4 चांद लगे हैं। तो आप लोगों को बहुत बधाई और एबीपी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। कैलाश जी, क्योंकि आप जिस विषय पे काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बचपन अगर सुरक्षित है, बचपन अगर सेफ है तो देश सुरक्षित है, देश उतनी ही गति से आगे बढ़ता है। आज़ादी के 75वें साल में हैं हम, और मैं पहला सवाल इस समिट का यही पूछ के शुरुआत करना चाहता हूँ। एक ऐसा आइडिया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के पास क्या है जो अगले 25 वर्षों में भारत को करना ही चाहिए ताकि भारत वाकई में सोने की चिड़िया के दौर में जा सके? मैं जिस एक आइडिया की बात कर रहा हूं या सोच पाता हूं, या एकमात्र आइडिया सोच पाता हूं, वो है कि देश का हर बच्चा निर्भय होकर, सुरक्षित रहकर, स्वस्थ होते हुए पूरी आज़ादी के साथ स्कूल की क्लासरूम के अंदर हो, स्कूलों में हो, पढ़े लिखे, और उसको वैसी ही शिक्षा मिले जो देश के बड़े से बड़े उद्योगपति के बच्चों को, देश के बड़े बड़े नेता के बच्चों को मिल रही हो। और इस आइडिया को मापने के लिए गांधी जी से प्रेरित होकर मेरा एक पैमाना है कि देश के किसी दूर दराज इलाके में, बहुत गरीब इलाके में एक लड़की की कल्पना कीजिए जो गुलामी में पैदा हुई है, जिसके माता पिता बंधुआ मजदूरी में रहते हैं, जो बच्ची हर तरह के यौन शोषण के लिए, शारीरिक शोषण के लिए और ट्रैफिकिंग के लिए वल्नरेबल है, उसको वहाँ से शोषित किया जा सकता है, पीड़ित किया जा सकता है। अगर हमारी योजनाएं अभी आज 75वें सालगिरह में, हमारे संविधान की मंशा, हमारे कानून, हमारी संपत्ति, हमारी दौलत, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हम सब लोग, हमारी सद्भावनाएं उस बच्ची के चेहरे पर आज मुस्कान लाएंगी तो 25 साल के बाद भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र होगा। मैं मानता हूं कि आज भी महान है, लेकिन हर दृष्टि से अगर हम फिर से सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाना चाहते हैं तो उस समाज की आखिरी बच्ची के चेहरे पर आज़ादी और प्यार की और इज्जत की मुस्कान लाना जरूरी है। तो ये, थैंक यू, ये होगा कैसे? हम 75वें साल में हैं, हम सब ने ख्वाब देखे हैं, हम सब के सपने हैं और हम चाहते हैं कि सपने साकार हों। अभी तक की जो स्थिति है बच्चों की, वो किसी से छुपी नहीं है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कैलाश जी, आपकी इजाज़त से। हमने अभी महामारी का दौर देखा और इस महामारी के दौर में जितना सफ़र बचपन ने किया है, बच्चों ने किया है, हम में से किसी ने नहीं किया है। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है और वो फोर्स्ड तरीके से बाल श्रमिक के लिए मजदूरी हो रही है, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। जब हम इस दौर में हैं तो जो आप सपना देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। सुमित जी, जब मैंने ये काम शुरू किया आज से 45 साल के लगभग पहले, तो ये कोई मुद्दा नहीं था, ना भारत में ना सारी दुनिया में। बाल मजदूरी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, ये ऐसे शब्द थे जो सुने नहीं जाते थे। हमारे देश में अपना कोई कानून नहीं था, दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था और योजनाएं भी नहीं थी, इसलिए सामाजिक चेतना नहीं थी, कोई किताब नहीं लिखी गई थी, मीडिया में कोई चीज़ छपती नहीं थी, छपी नहीं थी, संसद में एक बार भी इतने सालों में कभी बात नहीं थी उस पर। तो इसके बावजूद भी जो आपने कहा सपना, सपने में बड़ी ताकत है, सपने में बड़ी रोशनी है। सपने के साथ अगर संकल्प जुड़ जाए और उसके पीछे हम जाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और भारत, लोग कहते हैं कि बहुत समस्याएं हैं यहाँ,
लेकिन मैं इनहेरेंटली मानता हूं कि हम हमारे देश में भले ही 100 समस्याएं हों, सैकड़ों समस्याएं हों, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो समस्याओं के लिए नहीं समाधानों के लिए जानी जाती है। इसीलिए भारत बुद्ध और गांधी को जन्म देता है। भारत में 1 अरब समाधान है। अगर सैकड़ों समस्याएं हैं तो समाधान भी 1-1.25 अरब हैं। हम सब समाधान हैं। इस नाते हम सोचना शुरू करें। लेकिन व्यवहारिक रूप से ज़रूरी है कि जो हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं वो ईमानदारी से लागू हों, समयबद्ध तरीके से लागू हों। हमारी सरकारों, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को चाहिए कि वो बच्चों को प्राथमिकता दें अपने बजटरी एलोकेशंस में। हम लोग बहुत खुश होकर कहते हैं और हम सब गर्वित हैं कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा है। लेकिन 40% आबादी हमारे देश में 18 साल से नीचे के बच्चों की है और उनकी शिक्षा पर, सुरक्षा पर और स्वास्थ्य पर मिलाकर हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4% से भी कम पैसा खर्च होता है। तो इसको हमें बदलना होगा। ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल सरकार की नहीं, समाज के हर वर्ग की। अगर एक भी बच्चा जानवर की तरह या जानवर से कम कीमत पर खरीदा या बेचा जाता है, अगर एक भी बच्चा इस महान देश के अंदर गुलामी में जीता है, शिक्षा से वंचित है, तो हमें अपने आप को शीशे के अंदर झांकना चाहिए, कहाँ गड़बड़ है। हमें आत्मालोचना करना चाहिए और ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि ये बच्चे किसी और के बच्चे नहीं हैं, ये भारत माता की संतान हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हम इनको बचपन लौटाएंगे। बहुत खूब। कैलाश जी, मैं करीब 25 साल से पत्रकारिता में हूँ और मैंने आपको फॉलो किया है, मैंने आपको देखा है। हम लोग सैकड़ों बार मिल चुके हैं। आज भी जब आप अपने कैंप्स में जाते हैं जहाँ पे बचपन बचाओ के बच्चे हैं जिनको आप मदद कर रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि आपको नोबेल जैसा बड़ा पीस प्राइज़ मिला है? तो आज आप उनके लिए क्या हैं? देखिए, नोबेल शब्द तो वो जान गए हैं लेकिन ये बड़ा है कि छोटा है ये नहीं जान पाए हैं।